industry is there. Okay? You talk about the Apple's industry is there, sector is there, so that sector needs to be taken care of. So हम industry को कैसे देखेंगे? The first thing is what is happening in this industry? What is happening in this industry? I talk about one of my projects with Government of JP. So I am a co-PA for that project. We had a project on wool running under the HCDP project. Wool, we are producing a very good quantity of wool, around 74 lakh kgs of wool and very interesting. Because we consume a lot of mutton, and mutton, the sheep, one of the byproduct is wool. Now, when we are conceiving this idea that the wool processing should be there, the first thing I advocated about that, wool is there, but we need to look at that, what is happening in the fashion industry. Because if we are not able to connect with the fashion trends and the fashion designs that are operational currently, we'll end up कि हाँ हमारे पास wool है, इसका process sector ये है, and ये technology है wool बनाने के लिए. But we need to talk about the design. We need to talk about that how the customer trends, how the customers are buying. So that will become a more vibrancy in our entrepreneurship. Okay? What has happened with our handicraft? The shawls. अभी तो वो शॉल का जो सिंबल है इट्स हाई इन मार्केट अगेन बैक ऑल द हैंडीक्राफ्ट आइटम्स दिस इज बिकॉज़ ऑफ प्रेस्टीज दिस इज a rebellion effect that you want to have a status इसके पास मशीन ना शॉल एक्चुअली इट इज नो वेयर इन द मार्केट सेंस but the people who are going into reinventing the design process they are doing good business in comparison to all the people who are adhering to the all those traditional designs over the time. Okay? So industry look is very much important. How industry is working, how industry is moving. Number second, who are my competitors? Okay? Who are my competitors means competitors दो types के होते हैं. One is direct, one is indirect. One is immediate, one is bargain. देखा जाएगा. तो immediate or direct competitors are those who are actually into your field. I am in aggregates, some other is also in aggregates. This is a related competition. The people are working in the same domain. But then there are the people who are in the unrelated domain. Say someone is working on artifacts. I am making use of agriculture waste or some other waste, trying to make artifacts. So they are unrelated competitors. They are competitive, but they are not immediately. क्योंकि एक से प्रॉपरली किसी चीज से बना रहा है आर्टिफैक्ट एक कोई वेस्ट से बना रहा है सो देयर इज सम पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन एज पर द बिजनेस टर्मिनोलॉजी बिटवीन द टू देन वी आल्सो नीड टू टॉक अबाउट द मार्केट फोरकास्ट ठीक है अब देखो जो एक एंटरप्रेन्योर है ना ही कैन नॉट डू इट ऑल द थिंग्स सो यहाँ पे यू कैन use the support services consultancy services or some mentorship, some guidance, which the people who are having the expertise in this area, they can explain to you that how this is happening, okay, and what is happening. Or if not, you are not in a position to pay the consultancy fee, you can also, there are the industry outlook reports aa jati hai, you can also go again review those reports to understand that how the trend is going and what is happening in this. Then technology is also very much important. मैंने आपको already बोल चुका हूँ. Now this fourth component that should be reflected in your DPR is the description of the venture. Now this is most crucial कि मैं क्या बना रहा हूँ, what products and services I am making, then what will be the size of my business, what will be the equipments, how many personnel will be working with me, how many employees will be there, then background of the entrepreneur, ठीक है, and his vision and mission. इस डिस्क्रिप्शन वेंचर में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो वो स्लाइड में सबसे लास्ट में है, बट दे हैव अ हाई सिग्निफिकेंस, दैट इज अ विजन एंड द मिशन. व्हाट इज अ विजन? इट्स योर एस्पिरेशन दैट यू वांट टू बिकम, ठीक है, नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाट रिसोर्सेज यू आर करंटली हैविंग. गिव एन एग्जांपल. समटाइम्स आई जस्ट इमेजिन व्हाट इफ आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द USA, एंड दिस इज माय विजन. A vision cannot be something which is possible with me. A vision is something which is totally impossible. It's an aspirational which shakes your current existence. It's something you wanted to become. When you are a kid of से जो बोला 3 साल 4 साल के एज ग्रुप का, ठीक है, तो someone used to tell you क्या बनोगे, डॉक्टर बनूंगा, ठीक है ना.
तो who was aware at that time कि प्रदीप की 4 किताबें इतनी पढ़नी पड़ेंगी, देन नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, फिर कोचिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक, ठीक है, फाइलम्स। तो आप उस टाइम पे कभी नहीं बोलते फिर मैं डॉक्टर बनूंगा, but it's a vision, someone infuses in you that this is a something which at that time your intellect, your resources was something beyond your imagination. But then whole of your life after the 12th, you were just moving towards this vision, having a white apron, having a stethoscope, and then walking around the corridors of the gyms. Someone says, "Doctor साहब पहले हमें देखो." This is a vision, and you start imagining also sometimes. And I do imagine that, and I imagine something how it will be. Because this is something in the imagination of your mind, so you try to visualize the thing, because visualization has a more impact on your effect, on your working effect. So you start visualizing, and that vision pushes you always. Okay? And then is the next part, that's the mission, what you are actually doing currently. So one side you are talking about that I want to become a doctor, then one side you are trying to learn A for apple. You got my point? One is what is my aspiration to become, one is what I am currently doing in current resources and current circumstances. Okay? When you were ambition to be a doctor in 8th class, you were actually reading the Bible and उसकी वो तशनीया, then क्या था you were actually learning that, so that was a mission कि ये किसी तरीके से उतर जाए सबसे, बाद में डॉक्टर तो बाद में देखेंगे, पहले ये उतर जाएंगे फिर आप 10th का वेट करते थे, जिस दिन 10th का पेपर आप तो कभी नीट तक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? So that is a mission, that I want the excellence in the current things, whatever I'm doing. So mission is your current contextual factor. Now vision is your future aspiration. Now what is the link between the two? That we want the mission to translate into the vision. Whatever I am doing, I should go in that direction. That will give me my vision. I mean, when you were in say first class, you had a vision of becoming a doctor. When you crossed the 10th, you also had a vision of becoming a doctor, so you took the medical stream. Because that will translate into the qualification of the need and you will become a doctor. Okay? We cannot have कि मेरा vision doctor है, then I am having the BA arts. It cannot happen. ठीक है? अगर मुझे डॉक्टर बनना है 10th और 12th में, I should essentially have my subjects are medical or not medical, along with maths, not non-medical, medical. So I cannot have commerce. जैसे commerce लेके 12th में पास किया और NEET में कुछ एग्जाम देने के लिए. So your step should translate into the vision. ठीक है? So that's why I always say to whatever steps you are taking in your life, that should translate what you want to become in your life. That is an inspiration, that's the vision. So here in the business also, you may having agriculture waste processing with one crop, but over the time you are talking about all the agricultural commodities, all the soil waste management. That should be your waste management vision. Then the production plan, that how the process will be there, what physical plant, what machinery, what technology, what equipments, what will be the raw materials, what will be the suppliers, what will be the inputs, and all those things has to be there. And then the operational plan, that how the company's operation will flow, what will be the sequence sort of your orders, then services कैसे utilize होंगी, technology कैसे utilize होंगी. This is basically more or less talking about how you will be working in your firms. अब देखो जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, what will be talking about in detail in your DPR. Number one, कि मेरी मशीन की कैपेसिटी पर आवर कितनी होगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक कॉशियस है, ठीक है? कॉशियस पॉइंट ये है कि most of the entrepreneurs do it, ठीक है? जब हम खड़ा करना चाहते हैं ना एक एंटरप्राइज, चाहे वो एग्रीबेस का हो या किसी का, we think upon a big, बड़ा सा एक प्लांट लगाएंगे, ठीक है? अब मान लो मैंने 5000 मेट्रिक टन का प्लांट लगाया, ठीक है? बट जब मैं सीजन में या साल में प्रोसेस करता हूँ, फिर 2500 मेट्रिक टन प्रोसेस करता हूँ,
ठीक है, क्योंकि इनपुट उतना ही है, वर्किंग आवर्स का सबका कैलकुलेशन करके इट कम्स अराउंड 2500 प्रॉफिट, ठीक है। So 50% of my capacity remains unutilized. So 50% of my capacity is unutilized. This is an expense on my company. So it is not generating a profit or revenue. Because जब हम कंपनी खड़ा करते हैं, whatever we are investing, that should generate a revenue. If you are coming to the university, you have 4 classes in a day. That classes should add to your value. If they are not adding to your value, that means you have lost your money. Similarly, is in the business that whatever activities you are doing on the machinery or on the other part, that should generate a revenue or profitability for the business. If it is not generating, then it's an expense on the company. ठीक है? Then आपका total working hours कितनी? आप ये वैसी चीज नहीं कि आपको कंसल्टेंट लाना पड़ेगा. ये आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आपको क्लियर आइडिया होगा कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं जाऊंगा. Then machine capacity per day क्या होगी? ठीक है? वर्किंग मंथ्स डेज कितने होंगे मंथ में, ठीक है. यहाँ पे ख्याल रखना है कुछ लॉज भी है, ठीक है. जब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे कुछ लॉज और आल्सो देयर. नंबर ऑफ फर्स्ट लॉ इज देयर, आपका फैक्ट्रीज एक्ट आता है या इंडस्ट्रियल एक्ट आता है, बाकी चीजें हैं उसके मैंडेट के हिसाब से दिन का एक शिफ्ट 8 घंटे का होना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2 कि आपका हफ्ते में एक भी छुट्टी देनी है, ठीक है. ये चीजें मद्देनजर रखकर आप अपना शेड्यूल तैयार कर सकते हो कि मंथ में मेरे कितने वर्किंग डेज होंगे, ठीक है. अगर 8 घंटे का शिफ्ट है तो पर घंटा में कितना प्रोड्यूस करूंगा वो मल्टीप्लाई 8 कर लो तो वो आपका दिन का प्रोडक्शन हुआ, उसी को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ वर्किंग डेज से, वो आपका मंथ का प्रोडक्शन हुआ, उसी को मल्टीप्लाई करो 12 मंथ से, तो ये कहते हैं कि 1 ईयर में आप कितना प्रोड्यूस करोगे. तो फ्लक्चुएशंस विल बी देयर, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड कि हम कैसे करेंगे. देन आपका बेस कंसंट्रेट कितना होगा, वेस्ट में भी वेस्ट हो सकता है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, तो वो कितना कंपोनेंट होगा. देन फाइनल आउटपुट किस रेट से जनरेट होगा, रॉ मटेरियल कितना यूज हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट कैसे पैक होगा और नंबर ऑफ पैकेट्स पर हम कैसे हम कितने हम जनरेट करेंगे. दिस इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है. नॉर्मली जब आप डीपीआर बनाते हो देख लास्ट के 5 साल का एस्टिमेट करो, तो दीस आर द प्रोजेक्शंस, ठीक है. जैसे मैंने आपको बोला कि आप जब स्टार्ट करोगे मे बी यू स्टार्ट एट द रेट ऑफ से 5 or 6 hours per day ऑफ प्रोडक्शन, तो उसी को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ वर्किंग डेज से अराउंड 20 days per month, तो ये गेट 120 के आसपास, ठीक है. 20 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर वर्किंग आवर्स पे तो 120 वर्किंग आवर्स आ रहे इन अ मंथ, तो उसी को मल्टीप्लाई करो कि आपके साल में कितने चले. तो एज यू प्रोग्रेस तो उस कैपेसिटी को उसको आप बढ़ाते जाओगे. नॉर्मली इट हैपेंस एट रेट ऑफ 10 to 15 or 20% के हिसाब से ही इंक्रीज हो जाता है. तो यू कैन पुट योर प्रोजेक्शंस की मेरी कैपेसिटी कितनी है, उसमें से मेरा आउटपुट कितना होगा, दैट विल गिव यू टोटल कैपेसिटी में से मैंने कितना कैपेसिटी यूज किया, तो दैट यू कैन गेट द परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी. देन सिमिलरली आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपनी रॉ मटेरियल यूजेज क्या है, क्योंकि कैपेसिटी के हिसाब से आपका आउटपुट जनरेट होगा, उसी के हिसाब से आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि मेरा रॉ मटेरियल कंजप्शन कितना हुआ पर ईयर, ठीक है. एक्चुअली हम पहले पर मंथ कैलकुलेट करते हैं, दैट ट्रांसलेटेड टू द नंबर ऑफ ईयर एंड देन अकॉर्डिंगली वी कीप ऑन एडिंग एंड प्रोजेक्टिंग. Once we are done with the production part, then the next important part is the marketing. Now when you talk about the marketing, this is the part which most of the entrepreneurs and startups sideline, because they feel, well, my product is so much unique that I am going to sell in the market. No, there are 100 products like your product, which may be in a related form or sometimes in an unrelated form, existing. Okay? You may not be aware of that, but they do exist. ठीक है. ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका प्रोडक्ट आया वो मार्केट में नहीं है, नहीं, उसका रिलेटेड फॉर्म सब्स्टिट्यूशन फॉर्म कुछ ना कुछ वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. तो उस चीज को नजर में रखकर मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट दिस मार्केटिंग इज एन इजी जॉब, ठीक है. आई लव मार्केटिंग, देयर इज अ मार्केट रीजन फॉर इट, ठीक है. करंटली ब्रॉडली देयर आर द बिजनेस is divided into 4 types of functions in any business. One is production, one is finance, one is HR, and one is marketing. Production means how your production process is happening and all those things. So
So it involves cost because you are consuming the raw material, you are using the machinery, you are putting everything technology at the place. So you involve the cost. Then HR is the employees that are working, so you put a lot of money into the wages and salary, so that is also the expense. Then there is a finance, it's a management of the financial resources. Again, the people are involved in that, so you also want the cost. Marketing involves a cost, but it is the only activity in the business which generates the revenue. I told you, if you don't have a revenue generation model in your business, there is no fun of conducting that business. So the marketing plan has to be really robust. When we are talking about the marketing plan, we are talking about the pricing, we are talking about the distribution, we are talking about the promotion, we are talking about the advertisement, we are talking about the forecast and all those things. Though they should be, I mean, maybe in the future in another training, you may have a marketing plan devising workshop and that may be defined and deliberately in detail here. Then you have the organizational plan. That organization plan will talk about the owner of the business, who are the stakeholders, who are the partners, because someone investing money in your business, they should be knowing who is at the stake in this business. Okay? Because we are looking at these people that we are giving money to them. And next part is the assessment of the risk. Now, when we are talking the assessment of the risk, we are talking about the weaknesses of the business. It will not keep your business doesn't have any weakness. It may have, you may not be able to identify it, but they exist. But the thing is that we need to look into that how business weaknesses and strengths can be identified. There are a number of mechanisms for that. You don't want to go here. This is the most important part, that is the financial part. When we are talking about the financial part, we are talking about how the money will be managed. पैसा कहाँ से आएगा, किधर खर्च होगा, वो कहाँ जाएगा? This is most important part of the business. In life, if you cannot be anything, but you should always be a good financial manager. That doesn't matter you are from commerce background or non-commerce background. You should be good financial manager because that will tell us कि पैसा आया किधर से, आप किधर खर्च रहे हो, वो पैसा किधर जाएगा. Otherwise, you will become towards the bankruptcy. Then certain things needs to be attached as on comes on that appendix part. ठीक है? तो वो जो भी आपकी legal requirements होगी वो ये वाला part skip करते हैं ये भी. हाँ ये जो आपका आप ये अभी तक जो हम लेते हैं ना, we are talking about that कि agri-based DPRs में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ना, वो specifically in the agri-based part. And what components we need to take into the consideration and talk very deliberately in a very detailed manner that should be added into it. The first one is the wage generation. That is, because this is your input. So you should have an idea of that how much waste is actually generated. The first thing you will talk about is the average quantity of waste produced each day. Because that will give an idea that what will be my availability in a month, in a year. And how much you can process. Number second is seasonal variation in the wastage. For example, we are currently in the winter season here. The waste generation is very less normally in Kashmir in comparison to when it is in, say, summer season. Reason? We have the influx of the tourists. Okay? We have the people coming here. So normally the consumption of the things will go up. When the consumption of the things will go up, the waste generation will be high. Our restaurants will be highly occupied during summers in comparison to winters. Okay, number one. Number second, we as a locals also don't travel much. Okay, consumption is also very less. Okay, so the waste, solid waste generation, वो तो होती रहेगी, but beyond the solid waste generation, there is also the less. Then the oxygen variety, the seasonal variation is because of the non-agricultural operations, so वो भी एक factor बनेगा. Then the total quantity of waste produced annually during the last 3 years, because roughly मैंने बोला था कि 5 साल का estimate मांगा जाता है, 3 से 5 साल के, you should have a clear idea कि 3 से 5 साल के बीच में how much waste generation will be there and how much will be the availability will be. Then breakup of household जो generated होगा, household में कितना होगा, shops establishment में कितना होगा, vegetable and fruit markets में कितना होगा, meat fish slaughter houses में कितना होगा, construction and demolition sites से कितना waste generate होगा, horticultural waste कितना होगा, and hospital waste कितना होगा, industrial waste कितना होगा,
That will give you a then is the staff question, how many people are being roughly in my operations. So I will specify, I have specified a number of things. Number one, how many sanitation workers, because you need to collect the waste. Okay? You should have the people in the place that who will collect it. So it's a very different business model in comparison to other things. Then number second, sanitation workers कितने होंगे और उनका transportation कैसा होगा? Okay? Because that should not कुछ बिजनेस हमारे पास ऐसे होते हैं जहाँ पे वी आर रेगुलेटेड बाय द बिजनेस लॉज, बट जब यहाँ पे आ जाते हैं ना वी आर आल्सो रेगुलेटेड बाय सर्टेन पब्लिक एक्ट्स लाइक वी हैव द सॉलिड वेस्ट एक्ट, म्युनिसिपैलिटी एक्ट्स, ठीक है. सो ओनली सेट ना होना चाहिए कि वेस्ट कलेक्शन, डिस्पोजल, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा. यू हैव टू एडहियर देम टू स्ट्रिक्टली, बिकॉज आप मतलब वाइब्रेंटली सामने होंगे, विजिबिलिटी आपकी हाई होगी जब आप वेस्ट कलेक्शन पे होंगे. देन ना आपके स्वीपर रेशियोज कैसे होंगे. Then waste storage depots कितने होंगे आपको, देखो fragmented waste generation है, आप हर जगह एक ही चीज नहीं जा सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो. So we need to have waste depots जहाँ पे ये पुट किया जाएगा या जो कलेक्शन सेंटर वेस्ट होगा और वहाँ से फिर आप कलेक्ट करोगे. और कितने होंगे, कहाँ पे होंगे, फिर अगेन डिपेंड करता है कि वेस्ट का जनरेशन कैसे होगा उनके पार्ट्स में. Then transportation is the most important part, ठीक है. जो नॉर्मली हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स का वेस्ट जनरेशन होता है 2 पॉइंट्स हो जाता है, एक मिड डे में हो जाता है, वो एक नाइट में हो जाता है, ठीक है. सो ऐसे ही कि आपका अगर एग्रीकल्चर वेस्ट जनरेशन है तो ये कैसे कलेक्ट होगा, हाउ मेनी शिप्स विल बी देयर, हाउ मेनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स विल बी देयर, व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स विल बी देयर, व्हाट इज द साइज ऑफ दोस ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू. प्रोसेसिंग कैसे होगी वो मैंने आपको बोल दिया है. देखो दूसरा एक जो मैंने आपको DTR दिखाया, then there is also one other method by which you can have a detailed understanding how every waste entrepreneurship can be generated. This is called as a business canvas model, or also lean canvas model we बोलते हैं. Because there are a number of components, so they have an overlapping or relation with what we have been talking about. देखो ये जो वीडियो है इसमें आवाज में नहीं, चॉपस्टिक्स का, ठीक है. चॉपस्टिक्स जो यूज होती है ना मोस्टली इन द चाइनीज डिशेस में यूज किया जाता है. यूएस इज वन ऑफ द जहाँ पे बहुत यूज होती है, ठीक है. देखो ये एक बंदा है जिसने इसका एक मेजर बना है, ठीक है. तो इस मेजर में क्या करते हैं, ये चॉपस्टिक के दिन में जितनी भी होती है ना उनको कलेक्ट करके जाते हैं, ठीक है. कलेक्ट करके उनको प्रोसेस करके प्रॉपर्ली प्रोसेस करके क्योंकि वही अनहाइजीनिक होती है, तो उनको यूज करके उनको कंप्रेस करके यूजिंग सर्टेन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, तो फिर ये वुड के टाइल्स बनाते हैं. तो वेस्ट भी था, अवेलेबिलिटी भी थी, और उस अवेलेबिलिटी से इसने एक अपना वेस्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप रेवेन्यू खड़ा कर दिया. दिस इज हाउ दे डू इट. द वॉल्यूम इज नॉट देयर, they collect it on a daily basis ट्रक्स में, as per जो भी वेस्ट है उसके हिसाब से आपका व्हीकल डिफाइन होगा. इनको लाके ये अपने इसमें लाते हैं जो भी इनका मैन्युफैक्चरिंग का सामान है. फिर इनको कंप्रेस करके पहले हाइजीनिकली वॉश करके फिर उनको कंप्रेस करके छोटे छोटे टाइप्स डिग्री पे हीट ताकि सारी जर्म्स किल हो जाए, ठीक है. क्योंकि आप जब टाइल्स को यूज करोगे ये होम्स में जाएगा या ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट में जाएगा, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. फिर इनको कंप्रेस करके
फिर इनकी फिनिशिंग, बिकॉज टाइल जब वो टाइल बनेगा तो फिनिशिंग प्रोडक्ट्स में इनको फिर ट्रांसफॉर्म करना। This is a good prop, tabletop one. दो 2016 से ऑपरेशन है। इसमें आप ये वॉइस मुझे काफी अच्छा वीडियो था सर। आप इसमें पता नहीं इशू है, आप ये अगर शेयर करेंगे तो मैं ग्रुप में इनको मैं आपके साथ साथ शेयर करती हूँ, आप देख लीजिए। So with this I end my part and we end with the one note that you cannot have a zero elimination of the waste. They will come. Sustainable consumption and sustainable production, but waste will be there. But if you have a strategy and you can convert it into some more product, so we can have a better world ahead of us. Okay? Thank you so much. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time. I know you are also busy with the same training program, so I know how difficult it is to manage with the accounts after post-training. So thank you very much for joining us. Now I request, so it's a good time, I request you to the Basu to present a moment to Dr. ABID SULTAN.